Good afternoon, everyone. Welcome to today's session. Can someone tell me whether my voice is clear? And is this screen clearly visible to all of you? Okay, so today we'll be doing current affairs of 17th March 24. Okay, so without further ado, let's start with current affairs of today. So the first is SEBI beta version for T+0 settlement. So this SEBI T+0 settlement, if you usually follow the channel, so I've already made a short with respect to that. So where I have discussed that SEBI is planning to start with T+0 settlement cycle in the stock exchange. So primarily right now the stock exchange follows a T+1 settlement cycle. So currently what is happening, at least in terms of secondary market, we follow T+1 settlement cycle. That means your settlement will happen after the 1 working day of transaction. माने कि मान लीजिए आपने आज HDFC बैंक का स्टॉक खरीदा है, तो आपके डीमैट अकाउंट पर आज ही नहीं आ जाएगा. इट विल कम आफ्टर 1 वर्किंग डे. ठीक है, 1 वर्किंग डे वाई, बिकॉज मान लीजिए आपने फ्राइडे को बाय ऑर्डर प्लेस किया है, ठीक है, बट सैटरडे और संडे को तो मार्केट बंद रहती है. So naturally it will come on Monday, not Saturday. ठीक है, so ये तो T+1 settlement cycle होगी. But the SEBI is saying that we are planning to go towards T+0 settlement cycle. That means अगर आपने transaction जिस दिन करी है, ठीक है, instead of that 1 day, that transfer of shares into your demat account happens within the same transaction date itself. आज करी है तो आज ही आ जाएगा. डीमैट अकाउंट में आपका शेयर आज आपने बेचा है तो आज ही आपके बैंक अकाउंट में या ब्रोकर अकाउंट में पूरा पैसा आ जाएगा. सो दिस इज व्हाट द T+0 सेटलमेंट साइकिल इज. ठीक है, अबाउट विच द सेबी चेयरपर्सन इज सेइंग टू ट्रांजिशन टुवर्ड्स. सो इज दिस क्लियर टू एवरीवन? T+1, T+0, एनी कंफ्यूजन? So it is in this context, ठीक है, the SEBI chairperson is saying that we will be trying to implement T+0 settlement cycle from 28th March 2024. Okay, and this is being done on an optional basis. That means that whatever type of settlement you want, you can have. That means currently going on settlement cycle as well as T+0 settlement cycle, both will be applicable after March 28th. So whatever cycle you want, you can choose from. Okay, it's not like T+0 is compulsory over there. Both of these will be acting at the same time, so that SEBI not only can see after implementation of T+0 settlement cycle, is there any issue that is being generated on account of having this T+0 settlement cycle. अगर कोई है तो अभी ऑप्शनल बेसिस पे चल ही रहा है, इसको हम स्क्रैप भी कर सकते हैं, इसी को कंटिन्यू रख सकते हैं. ठीक है, so it's like a pilot that the SEBI will be doing after March 28 by utilizing T+0 settlement cycle. Okay, so that's why it is saying that the review process will continue till 3 to 6 months post implementation. ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि how much continuation of T+0 settlement cycle that we want. Next is a CII report with respect to startups' contribution in the economy. Okay, so such type of domestic reports are very important, and these statistics do come in a one-liner exam, especially in phase 1 GA. ठीक है, तो ये सारी चीजें phase 1 GA के लिए important है rather than ESI phase 2, and in you can utilize this data in your ESI phase 2 examination, especially descriptive paper. ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि
the question related to startups challenges in tier 3 and tier 4 cities already came back, in the previous examination. So anything related to startup, if you have data, you can utilize it over there. तो आप लोगों को पता होना चाहिए how can you utilize it. Okay, so the report title is Unicorn 2.0, in which they've talked about that what is the growth potential of startups in India. Okay, so the next phase of unicorn growth could contribute around $1 trillion to the economy by 2030. That's what the report is saying. Okay, and it is a very huge thing, because on account of startups, if we can increase our GDP by 1 trillion, so that would push us towards 7 trillion GDP growth rate. Okay, fueling around 15 to 20% GDP growth. That will inevitably, if anything pushes the GDP around $1 trillion, so naturally job creation will be huge. So the growth could generate over 50 million new jobs. Current ecosystem has already generated 12 to 13. Okay? And approximately 35% of workforce in Indian startups are women. अब ये देखो ये percentage, where can you compare this percentage? In startup ecosystem, you have around 35% women. Okay? So what's the case with respect to, let's say, and if you compare the female labor force participation rate, what's the scenario? Female labor force participation rate कितना है हमारे country में? Yes, around 27%. Okay, and when we talk about gap between male labor force participation rate as well as female labor force participation rate, it's around 47 to 48%. So that is a very huge gap. So you can say that if startups will grow, they will promote or they will reduce this gap of labor force participation rate. Okay? So I'm telling you the ways you can utilize such type of data. Inevitably, objective के point of view से तो data important है, but descriptive के लिए you will utilize this data and it will profoundly add value in your answers. ठीक है? And the current scenario with respect to startups that the report talked about is that India's 100 plus unicorns and 100,000 startups contributed 10 to 15% of the GDP growth from 2016 to 2023. Okay? And the combined valuation of 113 unicorns stand at $350 billion as of January 2024. So this is what the power of startup is. And in future, because of, let's say, technologies like AI and all those things, the entry barrier cost will considerably reduce. ठीक है? तो फिर हर एक के लिए आसान हो जाएगा to start a business. Obviously, to continue business, that's a different thing. But at least to start a business, to start a startup, that would become considerably low because of the technologies like AI and all those things. ठीक है? So we will see a lot more condensed, a lot more substantial startup ecosystem in the further going forward. Next is RBI's gold purchase in January is the highest in 2 years. Okay, let's see the news. The quantity RBI bought was around 8.7 ton of gold in January, the largest purchase since July 2022. Its gold holding has increased to 812 tons in January from 803, and the purpose is to diversify forex reserves and to hedge against foreign currency risk. So with respect to this, how can you relate this news with any of the news that you have just studied way back? कोई इससे related news थी regarding gold, RBI and the government? Infractions. Yes, Nitin, correct. Recently, we've just read a news with respect to that Government of India has removed the custom duty on gold imports by RBI.
हाउ मेनी ऑफ यू हैव स्टडीड? कल परसों की तो बात है ना? वी रेड की हाउ मच कस्टम ड्यूटी इज देयर विद रिस्पेक्ट टू गोल्ड? 15% बेसिक कस्टम ड्यूटी, फिर एडिशनल सेस 5% का, ठीक है? तो आपको उसका रिजल्ट दिख ही रहा है, ठीक है? बिकॉज द गवर्नमेंट रिमूव द बेसिक कस्टम ड्यूटी। गवर्नमेंट ने भी कहा कि इतना दबा के परचेज कर रहे हो, चलो ठीक है माफ कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है? Okay, just remember that this is old news, but the government has reduced custom duty now. ठीक है? तो ये तो जनवरी का परचेज है. What does this tell you? That the government is also allowing RBI to generate and hoard more gold because everybody is uncertain with respect to what's the future will be. Markets are also right now under correction mode. ठीक है? ये मतलब इसको रिलेट मत करने लग जाना कि इम्पोर्ट की ड्यूटी तो कल परसों ही हटाई है ना, मार्च में हटाई है, बट दिस इज द न्यूज विद रिस्पेक्ट टू जनवरी. सो द report tells us that in future also RBI will be importing huge amount of gold, so that's why the government has made the process much more smoother for Reserve Bank of India. Next is many ARCs within the striking distance of RBI's net owned fund norms. So news regarding this ARC was also discussed. Shishir, I'll take your question. देखो question I'll take at the end of the session, ठीक है? So with respect to this ARC and net owned fund norms, news related to this was also discussed. So some weeks before we discussed that ARCs के लिए net owned funds के requirement was increased in a huge manner. Okay, so primarily there is a date, cutoff date, which is this October 2022, which says that any new ARC कि मतलब जो existing ARC है उनको तो छोड़ो, जो new ARC है उनको अपना net owned fund का requirement, net owned fund basically net worth की तरह हो गया, ठीक है? Your assets minus liabilities, तो आपके पास कितना फिर बच के आता है. So that if that amount should be 300 crores for those new ARCs that is applying for registration after 2022. तो ये तो हो गया प्राइमरी क्राइटेरिया विद रिस्पेक्ट टू नेट ओन फंड्स फॉर न्यू ARCs. बट ऐसा तो है नहीं कि नए ARC को अलग बोलेंगे और पुराने ARC को अलग, तुम अलग चलाते रहो, हम आपको नए वालों को 300 लेंगे तो फिर वो कहेंगे कि डिस्क्रिमिनेशन तो बड़ा तगड़ा कर रहे हो. तो ये कोई तरीका थोड़ा होता है. सो नेचुरली जो पुराने ARCs है उनको भी RBI बोल रहा है कि आप ना तमीज से धीरे धीरे अपना नेट ओन फंड का रिक्वायरमेंट बढ़ाते चलो, ठीक है? एंड फॉर UCBs एंड NBFCs RBI हैज ऑलरेडी हैव अ हैबिट ऑफ प्रोवाइडिंग अ ग्लाइड पाथ. कि ऐसा तो है नहीं कि अगले दिन आप एक काम करो 300 करोड़ का माल उठा लाओ, कहां से ले आए भाई, ठीक है? तो RBI ने भी कहा है कि हर एक 2 साल में आप धीरे धीरे अपना नेट ओन फंड बढ़ाते चलो. और वो ग्लाइड पाथ क्या है? द ग्लाइड पाथ इज दैट आप 200 करोड़ का रिक्वायरमेंट बाय मार्च एंड 2024 तक जुगाड़ करके रखो और फिर 300 करोड़ आप मार्च एंड 2026 तक जुगाड़ करके रखो, ठीक है? तो ये तो क्या ग्लाइड पाथ विद रिस्पेक्ट टू ऑल अचीविंग दिस नेट ओन्ड फंड रिक्वायरमेंट. बट द लेटेस्ट नेट ओन्ड फंड तो 200 है, क्योंकि ये पुरानी ARCs को अचीव करना है. इसी के कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों ने न्यूज पढ़ी थी where it was saying that because of ARC's requirement of 200 crores, a lot of ARCs will lose registration. But now what the news is saying? Most asset reconstruction companies except for 2 or 3 are expected to meet the minimum net owned fund requirement of 200 crore by March end 2024 deadline. अब although it is written at the top, but don't assume कि 200 करोड़ का ही टारगेट था ओवरऑल, ठीक है? मार्च एंड तक दिस ईयर 2024 तक 200 करोड़ का टारगेट था. बट द ओवरऑल इफ यू सी एट द एंड दे हैव टू अचीव दिस 300 करोड़ नेट ओन्ड फंड रिक्वायरमेंट
बाय मार्च एंड 2026, क्योंकि नई जो आ रही है ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, उनको भी ये पाना है। ठीक है, सो इज दिस क्लियर टू एवरीवन? एनी कंफ्यूजन? किसी को कोई कंफ्यूजन? सबको समझ में आ गया कि व्हाट्स द टारगेट, व्हाट्स द ग्लाइड पाथ एंड व्हाट्स द टाइमलाइन विद रिस्पेक्ट टू अचीविंग दोज टारगेट्स? ये भी सेक्शंस क्या? ठीक है, लेट्स रिवाइज इट अगेन so that it becomes clear. So new ARCs, old ARCs, need 300 crore rupees to function as ARC, whereas old ARCs, they need to achieve 300 crore NOF by 2026. Glide path is there, that means achieve 200 crores by March 31st 24 and rupees 300 crore by March 31st 26. ठीक है? नहीं, सेक्शन 8 कंपनी थोड़ा होंगी, ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी थोड़ा है। चलो, let's do next. So we'll be talking about Bank of Baroda's report on ownership of government securities. Okay, so all of you understands that, you know, when we talk about government securities, RBI issues those government securities on behalf of central government as well as state government. ठीक है, तो central government के behalf पर RBI usually issues treasury bills for short term government securities and long dated securities, ठीक है, or dated securities for longer duration maturity period. Then for the state, RBI also issues state development loans, which also acts as a government security. So these type of different government securities are usually issued every year, and these are utilized in the whole financial ecosystem. ठीक है, चाहे वो उनका buying and selling हो रहा है via primary dealers or via other financial institutions. But at the end, if you look at how much or which kind of financial institution hold how much amount of government security, उसका report Bank of Baroda ने निकाला हुआ है. So this, even though a particular bank has released, doesn't mean this report is not important, because it tells us the data about government securities overall. ठीक है, तो एट द एंड, फॉर एग्जाम्पल, थिंक अबाउट कि scheduled commercial banks ownership of government securities has decreased from 45.1% to 35.7% in financial year 23. ठीक है, कि हमारे 100 गवर्नमेंट सिक्योरिटी अगर आरबीआई रिलीज करता है तो 35 scheduled commercial banks के पास है. So if you talk about financial year 23, 35 point how much? 7% holding. Okay, but they are still at the top.
ठीक है. Number 1 in terms of holding of government securities, questions related to such things have already arrived in PYQs. उन्होंने पूछा है कि second most holding of government securities is with what kind of companies. ठीक है, तो उसका आंसर था insurance companies. Similarly here also, if you look at rise of other players, तो insurance companies share has increased to 26.3% from earlier 20.7%. ठीक है. So insurance companies are at the second position in terms of holding of government securities, 26.3%. ठीक है. Now what about other players who are holding these government securities? For example, Reserve Bank of India is also there. ठीक है. And others share are also there. In others category there are pension funds and all others. ठीक है. तो others का share कितना हो गया? 14.6. And then we also have Reserve Bank of India also holding government securities. इनका percentage कितना हो गया? इनका percentage हो गया 9.7%, which has declined from 13.3%. तो एटलीस्ट आप लोग इस सब चीजों का तो ध्यान रखिए. 9.7%. Have these broad categories in your mind? कि within these broad categories the government securities are usually there. ठीक है. In which the topmost category is scheduled commercial banks. ठीक है. And RBI is at the bottom, 9.7%. और बॉटम इसको मत समझ लेना, बिकॉज अदर्स के अंदर अगर पेंशन फंड्स वगैरह हैं तो उनके शेयर और कम होंगे. बट आई होप यू गेट द आइडिया. इन दोनों का दिमाग में रखना, बिकॉज दे हैव वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ परसेंटेज. ठीक है. नेक्स्ट डेटा इज विद रिस्पेक्ट टू आउटस्टैंडिंग गवर्नमेंट डेट. कि मतलब जितनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज निकली हुई है उन सबका टोटल सम लगा के हम लोग देखें तो it will come out to be 146 lakh crores as of March 2023. ठीक है. That means up to financial year 2023. And if you compare this to financial year 2013, it was 42 lakh crores. Almost, 10 times jump. Next is net borrowings. Center net borrowings also increased by 8.5% to 11.46 lakh crores. State borrowing, if we talk about, state borrowings have increased to 15.19 lakh crores. तो आप लोग ये दोनों अमाउंट एटलीस्ट याद करके रखिए. ओवरऑल स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में दिस अमाउंट एंड आउटस्टैंडिंग गवर्नमेंट डेट 146 lakh crores. And what's the report projected with respect to what's the debt will be? Expected increase in ownership of government securities will be 162 lakh crores from 147 lakh crores. ठीक है. 147 lakh crores in March 2023 to 163 lakh crores in March 2024. So you can imagine how much increase is there with respect to government securities or government outstanding debt. Okay, so this is what this report is. Everything within this report or within this, report highlights is important. Please try to remember this. Government securities, RBI का critical function at debt management of the government of India as well as the state governments. So it is very important report. Do not miss it at any cost. Now it is, देखो फाइनेंसिंग ऑफ डेफिसिट और मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट में इतना अंतर है कि प्राइमरी बोरोवर कौन है. ठीक है. मतलब बेसिकली गवर्नमेंट इशू कर रही है और आरबीआई उसको प्राइमरीली बाय कर रहा है, तो फिर वो मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट है. बट आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट इज इशूइंग दिस इन द मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट. फिर वहां पर बाकी सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इफ दे आर बाइंग दोज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सो दैट यू विल बी कॉलिंग एज फाइनेंसिंग ऑफ डेफिसिट. ठीक है.
चलो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट रिपोर्ट. ठीक है, by Confederation of Real Estate Developers Association of India with respect to real estate sector growth projection. Okay, so the simple sa report है, CREDA report forecast real estate market to reach 1.3 trillion by 2034. ठीक है, and it also projects it to increase it to 5.17 trillion by 2047. रिपोर्ट का टाइटल क्या है? बिल्डिंग विकसित भारत, ट्रांसफॉर्मेटिव रोल ऑफ रियल एस्टेट सेक्टर इन इंडिया. And in context of real estate sector, if we focus on residential segment, the majority of current supply priced above 45 lakhs with 70 million additional housing unit demand projected by 2030. तो रेसिडेंशियल सेगमेंट में भी देयर विल बी ह्यूज डिमांड. तो अगर आप लोग सोच रहे हैं कि प्राइसेस डिक्रीज होने वाले हैं, तो वो बिल्कुल नहीं होने वाले हैं, क्योंकि नो सच इंडिकेशन इज बीइंग प्रोवाइडेड विद इन द रियल एस्टेट मार्केट. कोविड वाज वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी विद रिस्पेक्ट टू एनी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, whether it is real estate or whether we are talking about financial investments. ठीक है, इतना कहाँ मार्केट गिरता है, इतना गिर चुका था कोविड के टाइम में. ठीक है, नेक्स्ट इज अनदर इंपॉर्टेंट रिपोर्ट विद रिस्पेक्ट टू रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट टॉक्स अबाउट रिपोर्ट रिलेटेड टू sustainable development issues as well as environmental issues, which is a direct topic in your phase 2 ESI. And another thing is that it is released by a major governmental organization, Ministry of Statistics and Planning Implementation. So this makes the report a very important report in terms of highlights of it. Okay, so primary thing is that the report says that these states, Rajasthan, Maharashtra, Gujarat and Karnataka, they contribute over half of India's renewable energy potential. ठीक है, इन 4 स्टेट से हम लोगों को सबसे ज़्यादा उम्मीद है. जितना भी हम लोग बाहर जाके एकदम बोल के आ जाते हैं कि हम लोग इतना कर देंगे, 500 गीगावाट कर देंगे, ये देखो एक सब, आप भरोसा तो करिए हम पर, हम सब कर देंगे. इन 4 स्टेट्स के बदौलत हम लोग ये सब बोल पा रहे हैं. ठीक है, एंड इफ यू फोकस ऑन जस्ट राजस्थान, this leads with the share of about 20.3%. राजस्थान अकेला हम लोग को आगे बढ़ाएगा. Obviously, because if you're focusing primarily on solar energy as well as wind energy, so Rajasthan is a perfect spot with respect to, establishment of such type of renewable energy plants. Then if you see utilization status, so India utilized only 8% of its total estimated renewable power potential of 2100 gigawatt. कि इंडिया में जितना हम लोग का मैक्सिमम पोटेंशियल है टू यूटिलाइज एवरी डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड, जियोथर्मल, सब मिला के अगर हम लोग देखेंगे तो 2100 गीगावाट हम लोग जनरेट कर सकते हैं. तो उससे अभी हम लोग केवल 8% जनरेट कर पा रहे हैं. सो दैट्स व्हाई द गवर्नमेंट इज वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक इन टर्म्स ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन फ्यूचर. सो दैट्स व्हाई यू सी टारगेट्स लाइक 500 गीगावाट बाय 2030. And that's why you see huge amount of investment, huge amount of push by the government as well as private companies in terms of transition towards renewable energy. ठीक है? So in context of utilization, if you see small hydro and biomass energy utilization were around a quarter of their potential. And wind power had the lowest utilization of 3.7% of the installed capacity compared to its potential. Lastly, solar energy utilization was higher at 8.9%, while large hydro projects has a utilization of 36.1%. तो ये सारी चीज़ें हम लोग के जो मैक्सिमम पोटेंशियल है उसके कंपेयर में यूटिलाइजेशन स्टेटिस्टिक है. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन टर्म्स ऑफ हाउ you can utilize this data in order to tell that while transitioning into the renewable energy sector, how India is faring right now. ठीक है, आपको बताना पड़ेगा ना अगर implementation status क्या है. So these type of data will help you कि right now even after doing so much we are still at the 8% utilization status as per MOSPI report. ठीक है, स्कीम्स तो सबको याद रहती हैं, ऐसा डेटा आपको करंट अफेयर्स में मिल रहा है, रटने के अलावा आप इसको डिस्क्रिप्टिव में भी लिखिए. Next is shift towards renewable energy.
इंडिया इज ट्रांजिशनिंग इट्स एनर्जी मिक्स फ्रॉम कन्वेंशनल टू रिन्यूएबल्स, सबको पता है. प्लान इज टू इंक्रीज रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन टू 500 गीगावाट, ये भी सबको पता है क्योंकि हम सब ने पंचामृत पढ़ा हुआ है ना. तो इन पंचामृत प्राइम मिनिस्टर प्रॉमिस्ड दैट वील बी अचीविंग दिस टारगेट बाय 2030 at the international stage of UNFCCC. Okay, so the report also gives the future projections also with respect to utilization of various renewable energy. So by 2030 we'll be aiming to utilize nearly 40% of the solar power potential and 10% of the wind energy potential. तो solar power potential अभी right now कितना है? What's the current utilization of solar power? Roughly बता दो, exact नहीं पता तो. Nitin, that was wind. I'm talking about solar energy utilization. आप लोग इसको ध्यान से देखो ना. Solar energy utilization is at 8.9%, whereas wind had the lowest utilization of 3.7%. ठीक है? Please utilize this data. Please remember this data so that not only it benefits you in objective but descriptive as well. तो हम लोग 8.9 से उसको ले जाएंगे 40% तक, ठीक है? And 3.7 से we are aiming to increase it to 10%. Okay, so that's what the aim of this report is. Okay, so please keep this in mind. Next is, so key potential sources, wind and solar energy along with large hydro have the highest potential. Wind के पास इतना potential है 1100 गीगावाट का, solar energy 750 गीगावाट. Okay. Now let's move on to national and state news. आपको पता ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया तो ये नेशनल स्टेट न्यूज़ तो एनीवेज कम हो गई. So Maharashtra becomes the first state to launch its state bhavan in the Jammu and Kashmir Budgam district. ठीक है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाते हैं तो उसके बाद लग जाता है ना. उसके बाद कोई भी गवर्नमेंट कोई पॉलिसी नहीं कर सकती. ठीक है? सो जस्ट रिमेंबर द नेम ऑफ द स्टेट रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग फर्स्ट स्टेट भवन इन द वैली. Next, Agnikul groundbreaking suborbital launch. Okay, so such type of questions that are related to India's private space sector, especially companies like Agnikul, companies like Bellatrix Aerospace, company like Skyroot Aerospace, companies like Pixel as well. ठीक है, उनसे related जो भी especially those type of launches that are usually first, world first, India first, that are highly important. ठीक है, questions have usually been asked especially in the phase 1 aspect of these things. ठीक है, तो Agnikul groundbreaking suborbital launch is decided. Okay, so this is the world's first 3D printed and India's first semi-cryogenic engine will test fire its Agniban rocket. ठीक है, प्लीज याद करके रखिए, इट्स Agniban rocket launched by Agnikul Cosmos. It's world first 3D printed, and India's first semi-cryogenic engine. And if you see the founders, Srinath Ravichandran and SPM Moin, mentored by Satya Chakravarti. तो मोस्टली अगर आप देखोगे इन सबके बोर्ड मेंबर्स, जितने भी प्राइवेट स्पेस सेक्टर के बोर्ड मेंबर्स हैं, आपको इसरो, फॉर्मर इसरो पीपल यू विल फाइंड ओवर दैट.
ठीक है. Next is attracted $40 million in funding. ठीक है. So although these two news are not that much important, but this is very much important. आप rocket का नाम याद करके रखिए, and what's the famous thing about these rockets is that much important. Next is indigenous drug for sickle cell disease. So sickle cell anemia, as all of you know, was highly discussed in the previous budget because the government came up with this sickle cell mission. Okay, so in context of that, if you see, we already had this global drug to cure this sickle cell disease, but वो global drug कितना cost करता था? 77,000 रुपए इतना cost करता था. So in order to reduce the cost of drug that was used to cure sickle cell, especially in children, drug manufacturing company ACMOS drug जो भी आप इसको बोलो, okay, they have developed a drug, okay, which is also country's first indigenous hydroxyurea oral solution for treating sickle cell disease in children. ठीक है. The speciality about this oral solution is, apart from obviously the cost, which is around only 1% of the global available ड्रग, केवल 600 रुपए में ये ड्रग मिल जाएगा. ठीक है. दैट इट इज ऑल्सो, इट कैन बी स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर एंड इट रिमेन्स स्टेबल फॉर ट्रीटिंग द इलनेस. ठीक है. सो प्लीज रिमेंबर द नेम ऑफ द कंपनी, ACMOS ड्रग्स. ठीक है. गवर्नमेंट हैज ऑल्सो कम अप विद द नोटिफिकेशन रिगार्डिंग दिस. ठीक है. नेक्स्ट इज स्पोर्ट न्यूज. सो मुंबई win Ranji Trophy for the 42nd time. ठीक है. And they won after 8-year drought. The team which they have defeated in the final was Vidarbha. Next is Indian Street Premier League Middle East edition. Okay, so this is a new format. It's a T10 cricket league with 6 teams over there. Doha, Jeddah, Muscat, Kuwait, Abu Dhabi, Bahrain. Okay, team owners are famous cricketers or famous business persons. ठीक है. For example, Akshay Kumar, Amitabh Bachchan, Tamil actor Surya over there. Okay, and the whole Street Premier League is backed by Master Blaster Sachin Tendulkar. Next is Ashi Choksi performance at Polish Grand Prix in women's 50-meter rifle 3-position event. ठीक है. And she came second in the final with a score of 464.7. ठीक है. Next, Matthew Wade, former Australian Test wicketkeeper, retires from Test cricket. And if you see the appointment and awards, Navneet Kumar Sehgal has been appointed as Prasar Bharati Chief. And T.M. Krishna received Sangeet Kala Nidhi Award. ठीक है. So T.M. Krishna is eminent Carnatic vocalist and Maxesa Award winner as well. ठीक है. So this is all for today. If you have any questions, feel free to ask. Otherwise, we'll wind up the session. हाँ, मार्च से चालू कर लो. मार्च से तो कंपलसरी आधी रात प्लीज चालू कर ही लो, है ना. Kaustubh, we'll be checking it, okay, and we'll be updating you with respect to what's the
correct thing about that. नहीं, ये काम तो बिल्कुल मत करो कि कोई चीज़ आप बिल्कुल कंप्लीटली छोड़ दो, ठीक है। एट दिस स्टेज व्हेन द नोटिफिकेशन हैजंट अराइव्ड, फेज 2 छोड़ना सही नहीं, ठीक है। आप लोग फेज 2 करते रहो, बट इट डजंट मीन दैट यू डू नॉट डू फेज 1 क्वांट एंड रीजनिंग। दोनों चीज़ें साथ में लेके चलो, एक घंटा एटलीस्ट प्रैक्टिस करो, ठीक है, सो दैट बोथ द थिंग्स। क्योंकि होता क्या मैं बता रहा हूँ, नोटिफिकेशन के आप अगर नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद तो फिर छुओगे ही नहीं फेज 2, ठीक है। तो उस हिसाब से देख लो। कॉस्ट हैव अ प्रायोरिटी विद रिस्पेक्ट टू स्कीम्स। तो स्कीम्स में प्रायोरिटी किस हिसाब से रखेंगे? फर्स्ट वील कवर द बजट स्कीम्स, देन वील कवर द स्कीम्स मेंशन्ड इन द इंडियन इकोनॉमी रिव्यू, देन वील कवर स्कीम्स मेंशन्ड इन द पीआईबी, ठीक है। उसके बाद फिर बच गया तो जो भी स्कीम्स उसमें बचेंगी लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट स्कीम्स में, तो फिर वो कर लेंगे, और वो आप लोग मेन डॉक्यूमेंट से कर लो, तो दैट विल सफाइस। स्कीम्स के कॉन्टेक्स्ट में भी प्रायोरिटी लेके चलो, सो एज टू मैक्सिमाइज योर growth potential. If I do revision for PIB and CA from only the quizzes provided in the course instead of PIB, so will that suffice? हाँ, ऐसे कर सकते हो, बट फिर वो ना स्ट्रक्चर्ड नहीं रहता, तो याद कितना रहेगा, तो फिर आप उस हिसाब से देखो। करने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत लोग करते हैं, है ना, बट इट इज ऑल अबाउट हाउ मच यू कैन रिमेंबर एंड हाउ मच यू कैन पुट इट ओवर देयर। टाइमिंग्स फॉर सेबी क्लासेस, यार अमित, इसके कॉन्टेक्स्ट में यू जस्ट प्लीज कॉन्टैक्ट द द नंबर विच हैज बीन प्रोवाइडेड। हिंदी मीडियम स्टूडेंट को इंग्लिश लिखने और बोलने की कुछ स्ट्रेटजी बताइए। आई एम बैंकिंग एस्पिरेंट, प्लीज हिंदी मीडियम स्टूडेंट को इंग्लिश। अमनदीप, इफ़ यू कैन जस्ट फोकस ऑन बहुत छोटे छोटे सेंटेंस आप लिखिए और बहुत सिंपल भाषा में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो सिंपल भाषा में छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखता है उसकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत कम होती हैं और उसके नंबर सबसे ज़्यादा आते हैं। जो कॉम्प्लेक्स वर्ड लिखने की कोशिश करता है उसके चक्कर में ग्रामर ख़राब कर देता है, डिस्क्रिप्टिव में उसके नंबर बहुत कट जाते हैं। तो छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखने की कोशिश करिए, पढ़ने की धीरे धीरे कोशिश करिए, इट विल हेल्प यू। देखो आदिरत, मैं बताता हूँ, जीए आपका ना कट ऑफ पार करवा देगा, ठीक है, लेकिन सिलेक्शन का कोई भरोसा नहीं है। सिलेक्शन इज ऑल अबाउट क्लियरिंग द सेक्शनल कट ऑफ ऑफ ईच एंड इंडिविजुअल सेक्शंस, ठीक है। तो जीए इसलिए जरूरी है कि आपको ओवरऑल कट ऑफ से ऊपर जाना है, लेकिन आपको क्वांट और रीजनिंग इसलिए पढ़ना पड़ेगा कि सेक्शनल नहीं आया तो फिर दिक्कत है। और इंग्लिश तो आप छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि इंग्लिश में मेजॉरिटी ऑफ पीपल गेट गुड मार्क्स, तो उस हिसाब से देखो, ठीक है। तो ये चीज अपने दिमाग में रखो, जीए केवल पढ़ के जाओगे तो ओवरऑल निकल जाएगा, लेकिन सेक्शनल में चला जाएगा तो फिर क्या मतलब है, सिलेक्शन हुआ नहीं। और बहुत बच्चे हैं जो लास्ट ईयर यही चीज हुई उनके साथ। कम से कम 7-8 बच्चों से बात हुई थी मेरी, दे स्कोर्ड कितना, रीजनिंग में 9 के आसपास कट ऑफ गया था, दे स्कोर्ड अराउंड 8.75, मतलब 0.25 का डिफरेंस था, दे कुड नॉट क्लियर, और जबकि ओवरऑल कट ऑफ से 10-10 नंबर ऊपर थे। तो बड़ा खराब लगता है, ठीक है, आपको भी खराब लगेगा, इतनी मेहनत करके आप ओवरऑल कट ऑफ भी निकाल रहे हो बट सेक्शनल नहीं निकाल रहे हो। तो एट दी एंड मैं कह रहा हूँ, ये नॉलेज से नहीं, आपको स्ट्रैटेजी से निकालना पड़ेगा। नॉलेज इज अ बेसिक थिंग, तो वो तो चाहिए ही चाहिए, फिर उसके ऊपर स्ट्रैटेजी भी चाहिए, क्योंकि एट दी एंड सिलेक्शन चाहिए। तो आप भी जीए में स्कोर कर लोगे, ये
करंट अफेयर्स, पीआईबी और सर्कुलर्स पढ़ के जाओ। मैं कह रहा हूँ जीए में आपका आराम से 40 के आसपास स्कोर आ जाएगा, करके तो जाओ। हम लोग करंट अफेयर्स कैसे बना रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न, स्पेशली ऑफ लास्ट 3 years ऑफ आरबीआई। हर एक टॉपिक से क्या क्या स्पेसिफिकली एग्जामिनर पूछ रहा है, उसी बेसिस पे करंट अफेयर्स बन रहे हैं। ठीक है, सर्कुलर्स से करंट अफेयर्स बनते हैं, सर्कुलर्स हम लोग एक्सटेंसिवली कर ही रहे हैं। व्हाट मोर यू नीड? आपके क्यों नहीं आएंगे जीए में? और डरावना इसलिए था ना क्योंकि आप कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे, एग्जाम कुछ और आ गया। तो एक्सपेक्टेशन सेट करके रखिए। ठीक है, 80% ऑफ द पैटर्न विल रिमेन द सेम। 20% थोड़ा बहुत चेंज हो जाए, क्योंकि फिर वो वेटेज चेंज कर देते हैं। कौस्तुभ, बहुत बार हुआ है कि 1-2 दिन पहले की भी न्यूज़ पूछ ली गई है ना? तो उस हिसाब से आप लोग प्रिपेयर करके चलो। बट ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए हैं 5 दिन पहले। यूजुअली मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन आपको क्या कहते हैं, लास्ट के 3 महीने में मोस्टली रहते हैं क्वेश्चन। इक्का दुक्का क्वेश्चन आ जाता है 1-2 दिन पहले का। जैसे वो डेज वाले क्वेश्चन आते हैं, डेज वाला क्वेश्चन फंस जाता है यूजुअली। सेबी में भी हुआ था। सेबी में एक बार एग्जाम हुआ था, कब 7 या 8 जनवरी को हुआ था। तो एवरीबडी वाज लाइक कि क्या ही पूछेगा इतना पास का। सो दे जस्ट आस्क्ड यू इम्पॉर्टेंट डे ऑफ 2 जनवरी या 1 जनवरी, ऐसे कुछ पूछ लिया था। तो उस हिसाब से भी देख के चलना। दे हैव अ टेंडेंसी टू आस्क सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। हाँ, we have provided to you what are the schemes that are in news और in PIB। ठीक है, तो जिससे आप लोग एटलीस्ट जो स्कीम का मेन डॉक्यूमेंट है उससे पढ़ लो। ठीक है, बाकी मेन डॉक्यूमेंट में हम लोग अपडेट तो कर ही रहे हैं। यस नितिन, बताओ। ठीक है, we'll see what we can do about it. Any other question? Anyone? Nothing? चलो, thank you guys for joining. We'll meet in the next session. Till then, keep on revising. ठीक है, कल थोड़े क्वेश्चंस मैं ले आऊँगा। ओके, कल मॉर्निंग के सेशन में we'll do some questions related to today's current affairs. ठीक है, so till then, keep revising.